Okay, so as I also informed you in the last lecture, okay, most of the questions of circular motion are combined with gravitation. So you cannot expect circular motion questions independently. So yeah, so this question is also about the circular motion as well as gravitation. We haven't completed gravitation yet, but जितना भी हमने कर लिया अब तक, you can I think solve this question. So let's look at this. A spherical planet has mass m and radius r. The planet may be assumed to be isolated in space to have its mass concentrated at the center. Basic information, and we've already studied this. We already know all of it. Okay. The planet spins on its axis with angular speed omega. Omega is the angular velocity. Okay, as illustrated in figure 1.1. So, okay, so this is the planet. Here's the equator. Radius is r. So small object of mass m rests on the equator of the planet. The surface of the planet exerts a normal reaction force on the mass. Okay. State formulae in terms of m, r, and omega for the gravitational force between the planet and the object. So obviously in terms of mass, in terms of radius, in terms of omega, तो उसमें the formula for gravitation is gmm over r square. Yeah. The centripetal force required for the circular motion of the mass. So up centripetal force के लिए we've studied two formulas. Can you recall both of these for me? Hasan, can you hear me? सर एक मिनट मेरा माइक में इशू आ रहा है. Okay. Okay. So these were the two formulas that we studied of m square over r and m r omega square. So in terms of omega, this is the formula that we're going to pick. F is equal to mr omega square. The normal reaction force exerted by the planet on the mass. So now you see there's a force of gravity, and then there's a centripetal force. We know okay, the centripetal force is going to act inwards towards the center, and the gravitational force will basically be acting on the mass, right? And there's a normal reaction force that is acting on the mass. So there are two forces acting towards the right, and there's one force acting from the right to the left side, right? So the force which is acting towards the center is centripetal force. And there are two forces acting on the object, the normal reaction force and the gravitational force. Do you get this? सर एक बार रिपीट कर दें. ओके मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे ये देखो कि कितनी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट से लेकर, यानी दिस इज द सेंटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले तो दिस इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट? तो वी Yes. राइट दैट हियर. देन देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो उन्होंने क्वेश्चन में आपको बता दिया है, इट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज वेल. यहाँ पे That's normal force. yeah, so normal reaction force is also there, and all of these forces are equal to the opposite force, that is a centripetal force acting from the object towards the center. So this is the equation that we're getting, right? Force of gravity plus normal reaction equals to the centripetal force. In order to find out the normal reaction force, you're going to make it the subject. So normal reaction is equal to the centripetal force minus force of gravity. So what was the एक ही बात है force of gravity, इसको minus कर दो उसको. तो what is the force of gravity? gm over r square, right? Yes. Minus mr omega square. So in terms of mmr omega, आपको सारे answers दे रहे हैं. So this is the equation. Now, explain why the normal reaction on the mass will have different values at the equator and the poles. Poles और equator पे जो normal reaction है उसकी values different क्यों होंगी? Look at this equation, Hasan. Can you guess
कि यहाँ पे अगर comparatively if the object is on this point, let's say position A, or it's here on position B, why would the normal reaction force be different on these 2 points? रेडियस तो बिल्कुल सेम ही होगा, उसमें तो डिफरेंस नहीं है। Hmm. आई गेस व्हाट वेट अ सेकंड। देखो आपको look at the centripetal force. Centripetal force, will it vary on equator and फिर on the ऑब्वियसली poles? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। ओ राइट राइट, वेट सेकंड, क्योंकि उसमें जब हम Hmm. वो लाइक मूव करेंगे नीचे तो ग्रेविटेशन ऊपर ए पॉइंट पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ बिल्कुल। एट द सेम टाइम, वो लेकिन आपको जब हम वो बी पे आपको मूव कर याद आई जाते हैं है और डायरेक्शन इक्वेशन, डिफरेंट हो जाती जो है, या लास्ट तो लेक्चर में कॉम्पोनेंट इक्वेशंस है। हम देख रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल सेंट्रीपिटल। यस, वो कॉम्पोनेंट्स भी आ जाते हैं फिर उसमें जब आप डायगोनल मूव कर जाते हैं। एग्जैक्टली। अब हम we were talking about the exact vertical position. You don't have to go into the resolution for now. यस, इसलिए वर्टिकल पे दैट्स व्हाट्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग टू बी लार्जर। Exactly. तो आई अगर थिंक अगर आप if you're moving let's say further apart, so your centripetal force would decrease, right? एग्जैक्टली। एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर और एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसको देख लो, रेडियस आपका इंक्रीज, टेक्निकली इनवर्स रेडियस इज रिलेशन है। इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली, द फोर्स वुड डिक्रीज। अब जब ये द सेंट्रिपेटल फोर्स इज डिक्रीजिंग, तो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स will have a different value, right? Okay, राइट। I'm going to clear all of these diagrams and we'll look for the exact answer as well in the mark scheme. ये this is part B. Okay, so देखो यहाँ पे let's see what the marking scheme says. Either values of R in expression R omega square varies, or m r omega square no longer parallel to g mm over r square slash normal to surface becomes smaller as object approaches pole. हाँ, तो बस इसमें आप जो आसान डेफिन अगर आपने एक रिलेशनशिप पे करना है, तो जस्ट ये r varies, why? Because the radius increases. हमने ये बता दिया because r varies, तो you're getting 2 marks. तो एक आपने रिलेशनशिप दे दिया, उसके बाद you just tell के the normal reaction becomes smaller because radius increase हो रहा है, force is decreasing, so reaction force would also decrease. Do you get it? This is How is like how, radius changing? Isn't radius the same at both points? देखो earth is not exactly spherical, Oh, okay. है ना? तो poles पे जाके the radius increases. So like I can't assume कि point A और B पे radius same नो होगा. नो नो नो, यू कैन नॉट। इसीलिए तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओमेगा, या आप इक्वेटर पे हो और फिर आप मूव करो पोल्स पे, व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक? तो this is, I mean, this is where they're challenging you to understand the difference in the radii and then comment on the effect it will have on the normal reaction force. सही है? Okay. Yes, clear. Okay. Okay, let's look at part 3. Calculate, sorry, the radius of the planet is 6.4 times 10 to the power 6 meters. It completes one revolution in 8.6 times 10 to the power of 4 seconds. Calculate the magnitude of the centripetal acceleration at A, at the equator. अच्छा, तो again, we're talking about the equator. ये वाला point है, ठीक है? यहाँ पे you're asked to find the centripetal acceleration. A is equal to R omega square, right? या v square over r, ये दो formulas हैं आपके पास. You're given with the radius of planet and you're given with it completes one revolution at, अच्छा, I don't think इसको हमने use करना है, लेकिन let's see. तो अब आप मुझे बताओ कि by looking at the information, what do you think, which formula should we choose and how should we move towards the centripetal acceleration? अच्छा, एक सेकंड, हसन, hold on for a minute. Okay. Yeah, Hassan, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, we're discussing this question here.
So for acceleration, let's look at the formula. अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग a is equal to ओमेगा ओवर t पे भी जा सॉरी थीटा ओवर t पे भी जा सकते हैं if you remember this formula. तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर या ये थीटा वाला नहीं मुझे याद आ रहा है, ये जो अभी आपने लिखा है। थीटा वाला नहीं याद आ रहा, ये जी हमारा ओमेगा का था, सॉरी हाँ ओमेगा, ओमेगा का था या इट्स हाँ हाँ ओमेगा इज हाँ इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो अगर हम यहाँ पे ये करें, रेडियस तो हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा प्रेजेंट है। स्क्वायर है ना, देखो रेडियस तो है हमारे पास, और ये जो है दिस इज 2 पाई, राइट, टाइम भी है हमारे पास, तो लेट्स फिगर आउट ओमेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रेडियस तो है तो विल जस्ट गेट एक्सेलरेशन, राइट। तो राइट। ओमेगा इज इक्वल टू, देखो इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन तो ऑब्वियसली you'll have steps involved, तो 2 पाई as it is, time is 8.6 times 10 raised to the power of 4 whole squared. Now if you use a calculator, can you tell me what is the answer for this particular part? 2 pi over 8.6 times 10 raised to the power of 4 whole square. इट्स लेट मी टाइप इट। I think यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ये 7.31 times 10 power of minus 3 का whole square बनेगा। थिंक इट्स 5.34 into 10 is per power minus 9। 5.34 times 10 is to the power of minus 9 multiplied by the radius. Now we're using this formula here, right? And the radius Yeah. is 6.4 times 10 raised to the power of 6 meters. You multiply these two quantities, your answer should be 0.03416। Yeah, 0.034, बस हमने ये पे राउंड कर दिया। ठीक है, do you get it कि how this was the basic formula, ये वाला, but because we didn't know omega, so we had to expand omega theta by t वाले formula पे, and then we got the answer for the acceleration. This was just at the equator. We need to figure out the acceleration at one of the poles. Should I clear this up? yes, you can clear it up। अच्छा, at the poles, acceleration क्या इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे? पोल्स पे तो लाइक स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, बिल्कुल तो आई गेस लाइक zero. Yeah. एक्सेलरेशन विल बी जीरो। Why? Because the um, yeah, the speed is constant, और you could say explanation नहीं मांग रहे। अच्छा नहीं, ठीक है चल। So just two factors that could, in the case of a real planet, cause variations in the acceleration of free fall at its surface. You would have studied the concept of the free fall acceleration in AS level, जिसमें acceleration effect होती है because of the air resistance, and दो cases होते थे और एक है जिसमें there's no external force involved, that is the case of free fall. So there's two factors that could, in the case of real planet, cause variations. If let's say एक real planet है और उसकी surface पे if you look at the free fall acceleration, why would that vary at different points maybe? देखो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि acceleration is different. Acceleration at poles is different. Acceleration at equator is different. Although the value varies with a very slight difference. Yeah, if it's 0 here, if it's 0.034 here, there's a very slight difference between these two values, but there is a difference there. Yeah. Why are these two values different? If the object is over here, if the object is over here, why is there a difference between these two values? Number one, we've talked about this factor before as well. The radius is different.
So the radius varies. Yeah. And it will have an effect on the acceleration. Why? Because it has an effect on the centripetal force. All right. Second point repeat कर दें. मैं कहता radius vary करेगा. It will have an effect on the acceleration. Why? Because variation in radius affects the centripetal force. Force बदलेगी तो acceleration भी बदलेगी, right? And the second point is the density of planet is not constant everywhere. Yeah, you could also say there could be nearby planets and stars that can have an effect over the acceleration. तो multiple reasons हो सकती हैं. Density का effect किस तरह होगा? Density जब constant नहीं होगी तो इसका मतलब ये आपका वॉल्यूम और फिर उसके बाद इन रिटर्न आपका जो वॉल्यूम को तो हम नहीं कहते, लुक एट द मास, और फिर या फिर उसके वो साथ F is वो equal to m you can Newton second law को एग्जैक्टली connect कर वो सकते हैं वैरी यहाँ कर पे. जाएगा यहाँ से. तो आप ये कह दो कि यहाँ पे डेंसिटी नॉट Might कांस्टेंट, vary. or you could even say nearby planets or stars. Interaction of gravitational forces and all of that can affect the gravitation force. In turn, force would relate with the acceleration. So nearby planets or stars. You can pick up any two reasons for this one. All clear? Yes, clear up to now. इसका marking scheme देख लेते हैं. ये है कि radius planet varies, density planet not constant, planet spinning, nearby planets and stars. Any sensible comment? Okay, let's look at this question here. A binary star consists of two stars, A and B, that orbit one another as illustrated in figure 1.1. Okay, so look at star A with mass A, star B with mass B, and they're separated by this dotted line. They have the separation is 2.8 times 10 to the power of 8 kilometers. Again, you see separation kahan se shuru ho rahi hai? From the distance, from the radii. Yahan se. We're discussing this in detail. Stars are in circular orbits with the centers of both orbits at point P, a distance d from the center of star A. Again, star A, point P is basically separated by this distance d, if you look at it with reference to the center of mass of star A. Explain why the centripetal force acting on both stars has the same magnitude. Why is the centripetal force exactly the same on both of these stars? This is the question. हमें एक बात पता है कि centripetal force originates because of the force of gravity, right? तो वो same होगी. Yeah, since the gravitational force, because F is equal to gmm or r squared, it depends on both the masses. It depends on the separation. That is exactly the same. So since force of gravity is constant, ठीक है? Same force of gravity. Hence, same centripetal force. The period of the orbit of the stars about point P is 4 years. Calculate the angular speed omega for the stars. तो आपको period of orbit मिल गया, यानी time period, that is 4. Omega का formula था theta over t. So वो 2 pi over 4 हमें seconds में convert करना पड़ेगा पहले years को, right? Definitely. अच्छा, इसको मैं क्लियर करके नीचे फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला. आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे खैर. एनीवेज 2 पाई ओवर टी हम कर लेते हैं फिर से. 2 पाई एज इट इज टाइम, so 4 years into days, To be 65 days into 24 hours into 3600 seconds. it's going to be a huge value. Yeah. Answer will आ रहा है 4.98 into 10 is the power minus 8. And you can round it off to 5.0. 10 is to the power minus 8 radian seconds negative 1. Remember, this is the unit for omega. Because radians किसका आ रहा है? ये theta. And time is in seconds.
So this is angular speed of the stars. Okay, the separation of the centers of the stars is 2.8 times 10 raised to the power of 8. Mass of star A is MA and the mass of star B is MB. The ratio MA over MB is 3. Achha, they've given you the answer for the ratio and not the exact values of masses here. Determine the distance D. So for distance D, हम क्या करेंगे? Let's look at the formulas for centripetal force here. अगर आपको if we because we know omega, right? तो if we go for mr omega square और मैं आपको ये कह दूं कि ओमेगा तो दोनों में सेम रहेगा, राइट? बिकॉज दे हैव द सेम एंगुलर स्पीड. तो centripetal force of star A is equal to centripetal force of star B, right? ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है अभी. बिल्कुल. Expand. mr omega square of star A is equal to mr omega square of star B. Omega omega eliminated because the same value. Mass of star A, let's write it as ma, and r is equal to mb r. और अच्छा, अगर हम यहाँ पे r को कंसिडर कर लें एज, देखो हमें ये पता है कि, अच्छा वी विल हैव टू गेट बैक टू द क्वेश्चन. यहाँ तक फॉर्मूला समझ आ गया, एम ए आर इज इक्वल एम बी आर. यहाँ कहाँ तक तो समझ कैसे? आ गया. ठीक है, आई कैन erase this off now. Let's look at this again. यू नो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस d है इसको भी हमने पहले इसमें कंसिडर करना है. तो एक तो अगर हम यहाँ पे ये कहें, होल्ड ऑन, separation of centers of the stars is ye, you're supposed to find distance d. So what you're finding here is this value, the value of d, just till point p. So if you subtract 2.8 में से distance d, आपको मिल जाएगा remaining distance, right? Right. तो हम ये करते हैं कि what we're trying to understand here is that distance d, हम इसको point A कह रहे हैं, point B. So distance d is the distance between A and P, and the remaining is the distance between P and B. So understanding this equation here, let's get back to this question. अब अगर if I tell you कि यहाँ पे हमने लिखा था MAR is equal to MBR. जो ये MAR था, this is basically MA times D is equal to, this was MB times 2.8 times 10 to the power of 8 minus D, the remaining distance. तो इसको अगर आप D से डिवाइड कर दो, MB को इधर M दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दो, तो D एलिमिनेट हो गया यहाँ से. तो इक्वेशन बचेगी, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर नाउ, MA over MB is equal to 2.8 times 10 raised to the power of 8, sorry, minus D divided by D. इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे अब वो MA Exactly. 3D बन गया. आगे आपके पास यही चीज आ गई फिर से. तो लेट्स मेक D the subject of the equation. 3D plus D हो जाएगा, 4D बन जाएगा, is equal to 2.8 times 10 to the power of 8 divided by 4 करके the answer that you will get here is 7 times 10 raised to the power of 7 kilometers. अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज की समझ नहीं आई कि जो हम्म, रेडियस वाला सेक्शन था, क्योंकि उन्होंने रेडियस है वो MA के साथ भी रेडियस है, तो वो तो लाइक जो बोनस दोनों स्टार्स का रेडियस है, उसमें हमने D को किस तरह यूज कर लिया बीच में, लाइक वो डिस्टेंस तो एक्सक्लूड भी हो रहा है उसके अंदर. इट्स नॉट जस्ट द रेडियस, जो डिस्टेंस D है. अच्छा एक सेकंड.
अब मुझे बताओ यहाँ पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस, वो तो सिर्फ इतना सा पार्ट है दोनों का। या तो उन्होंने तो रेडियस मांगा हुआ है, तो हमने डी को किस तरह यूज कर लिया उन्होंने है? रेडियस, उन्होंने तो डी मांगा हुआ है। तो वो इक्वेशन के अंदर किस तरह वो फिट हो गया वो रेडियस की जगह? इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ऑर्बिट कर रहे हैं इसके अराउंड। ये तो पूरी इक्वेशन इज विद रेफरेंस टू पॉइंट पी। ये स्टार, ये वाला जो स्टार है, इट्स सेपरेटेड बाय डी एंड दिस इज सेपरेटेड बाय इस वैल्यू को मैं एक्स कह रहा हूँ। तो दिस स्टार इज सेपरेटेड बाय एक्स माइनस डी। तो नाउ यू नो देयर आर टू प्लैनेट्स जिनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन, जहां पे ऑर्बिटिंग पॉइंट है, उससे ऐसे वैरी करें। देखो हसन, जब हम ये कहते थे कि एक आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ ये है और एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, तो आप दोनों सेंटर ऑफ मासेस के दरमियान का डिस्टेंस लेते अच्छा थे। अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ समझ गया, आया? याद आ गया, अब ये आपका याद आ सेंटर है, ये जो पॉइंट है, और ये दोनों आपके बाकी दोनों सेंटर्स हैं, ए और बी के। तो रेडियस आप को एक्सक्लूड करके भी जो बाकी डिस्टेंस है वो भी लेना होता है, वो इट्स भी नॉट लेना जस्ट होता है, रेडियस। एब्सोल्युटली। ठीक है, समझ आ गया। Use your answers in A part 2 and B part 1 to determine the mass MB of star B. What was A part 2? A part 2 था जी हमारे पास ये वाला ओमेगा की वैल्यू, which was 5 times 10 to the power of minus 8 radians. And the answer to part, let's write these answers once again here so we can know okay, what we're using. Omega was 5 times 10 raised to the power of minus 8. And D here was 7 times 10 raised to the power of 7. To calculate the mass B of star B. तो अगर if I tell you, देखो हमने अभी बात की थी कि centripetal force is equal to the gravitation force. So we're gonna again use the same equation. Gravitation is G m m यानी ma mb over r square is equal to mr omega square. तो m r क्या यहाँ पे d है, basically the distance till point p and omega square. Do you get it? If what we're यस finding सर। here is the mass of star B, and we're using the equations of the centripetal force and gravitational force. We're equating these equations. We're using distance d. Why? Because you're supposed to use this answer. And why are we using this answer? Because P is the central point. This is where the gravitational force acts. That is where the planets orbit about. So using these two equations, अच्छा यहाँ तक simplified हो गया सब कुछ। अब मैं इसको hold on. वैल्यूज इनपुट करेंगे अब। Exactly. यहाँ पे अब हम ओके, सो जी ग्रेविटी का कांस्टेंट तो हमें पता है 6.67, why is my pen not working, times 10 is power of minus 11 times आपने you know ma, do we know ma? नो, आई थिंक एमए इज मिसिंग। We just know a ratio here है ना इनका। कोई 3 रेशियो दी हुई है उन्होंने। तो चाहिए काम करते हैं जब वैसे I'm using whiteboard now क्योंकि ये बहुत ही the pen is not working on this PDF file, so I'll be writing the equation here on the board. Let's write in the formula again. GMAMB over R square is equal to M R. यहाँ पे जो M है, this is MA R कैंसिल आउट हो जाएगा D फिर। omega square, exactly ये cancel out होगा। G times M, अब हम वैसे मैथ वैल्यूज डाल सकते हैं, 6.67 times 10 raised to power minus 11. MB is what we're finding. R square is the value of D. 7 times 10 to the power of 7 का square is equal to D
नहीं 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 नहीं, ये तो आर की वैल्यू है, यहाँ पे 2.8 वाली आएगी। आई थिंक पहले आपको एमबी को सब्जेक्ट बना लेना चलो एक चाहिए था बना अपने लें लिए। ताकि आसान हो जाए। ठीक है, एम बी इज इक्वल टू डी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स हम्म, आर स्क्वायर। तो डी वॉज 7 टाइम्स 10 to the power of 7। ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अभी, 5 टाइम्स 10 to the power of -8 whole square, and radius was 2.8 times 10 to the power of 11 whole square। यहाँ डिवाइडेड पे बाय जी जी। भी है by the way, हाँ ठीक है, 6.67 टाइम 10 to the power of -11, so this is the equation। स्क्वायर एंड 2.8 into I सॉरी think क्या, it's 7.34 into 10 is to the power of 14. अच्छा 7.34 टाइम्स 10 to the power of 14। Oh God. No, no, no. I think मैंने स्क्वायर नहीं लिया है एक। अच्छा okay। Let me check all the values. That is 2.05 into 10 is to the power 26. 2.05 10 to the power of 26, let's check the answer। 10 to the power of 29 आ रहा है। आई थिंक वो 29. कैलकुलेशन एरर होगा, बाकी इक्वेशन तो सही है। 2.8 टाइम्स 7 टाइम्स 10, ये तो नहीं मैंने वैल्यू गलत लिख दी गई। आई थिंक आई रोट दिस वैल्यू Yeah, 7. आपने power 7 लिख दी थी। पावर 7, ठीक है बस फिर सही हो जाएगा। ऑलराइट, तो डिड यू गेट दिस? या समझ आ गई इसकी। I think प्रैक्टिस से ही आएगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस इसीलिए आई वांटेड टू provide you an insight as to how the questions will be designed in the paper, किस तरह के questions you should be expecting। तो बाकी ये है कि the more papers you practice, you'll get an idea of the practice किस तरह की आपको चाहिए। Anything else?